हम एक नहायत अहम सवाल को हल करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टॉपिक से मुतालिक है। सवाल में हमें इवैल्यूएट करने को कहा गया है 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में से एक है, यानी 1 + ओमेगा स्क्वायर को 0 और ओमेगा क्यूब 1। अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। है गिवन के 1 + ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8। अब हम 1 + ओमेगा की जगह वैल्यू लगाएंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। एडिशन के बाद यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन -2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8 के बराबर है। अब चूंकि ओमेगा क्यूब इक्वल होता 1k, इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा स्क्वायर टर्म को मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब इसको मजीद सॉल्व करने से आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा जो कि 256 ओमेगा बनता है। गिवन क्वेश्चन है k ओमेगा पावर .28 प्लस ओमेगा पावर 29 प्लस 1 को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में से एक है और इसकी ये अहम खासियत होती है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, यानी ओमेगा की पावर हर 3 स्टेप्स के बाद रिपीट होती हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें ओमेगा पावर 28 प्लस ओमेगा पावर 29 प्लस 1 को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन ओमेगा पावर 28 प्लस ओमेगा पावर 29 प्लस 1 इज इक्वल टू ओमेगा पावर 27 डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा पावर 27 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। देन पावर्स को 3 के टेबल में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ हमें ये बात मालूम है कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता 1, इसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। देन जो सिंप्लीफाई करके आएगा वो बनता है 1 + ओमेगा स्क्वायर। And you know, sum of cube roots of unity is equal to 0. Hence, the answer of given question is 0. We need to simplify the expression 1 + omega square. Multiply 1 minus omega plus omega square. Now to simplify 1 + omega minus omega square, we use the relation 1 + omega square equals 0, which gives us 1 + omega equals minus omega square. And 1 + omega square equals minus omega. Putting these values and then simplify, we will get answer 4. We'll simplify an expression involving cube roots of unity. The given expression is -1 + square root -3 divided by 2 whole power 9 plus bracket -1 minus square root -3 divided by 2 whole power 7. We know from cube roots of unity properties that omega equals -1 plus square root -3 divided by 2 and omega square -1 minus square root -3 divided by 2. These are the basic cube roots of unity. So the expression can be rewritten as given is equal omega power 9 plus omega square whole power 7. Then convert the powers in table of 3. Thus the final result of the expression is 1 + omega square, and which is equal to minus omega. In this way, using properties of cube roots of unity, we have successfully simplified the expression. In this problem, we are given an expression involving powers of complex numbers and need to simplify it using the cube roots of unity. The given expression is -1 plus square root -3 whole power 5 -1 minus square root -3 whole power 5. We already know the cube roots of unity. Omega e -1 plus square root -omega divided by 2, and omega square -1 minus square root -omega divided by 2. Now, if we multiply both expressions by 2, we get 2 omega equal -1 plus square root -3, and 2 omega square -1 minus square root -3. Substituting these into the given equation, we rewrite it as give equation equals 2 omega whole power 5 plus 2 omega square whole power 5. Now we know that 2 power 5. Then change the powers of omega in the table of 3. Then it will become 32 omega cube dot omega square plus 32 omega cube power cube dot omega. You know, omega cube equals 1. Putting this after that, we get 32 omega square plus 32 omega. Take common 32.
Then equation become 32 bracket omega plus omega square bracket off. Using the property of cube roots of unity, we know 1 plus omega square equals 0. So omega plus omega square is equal to -1, plugging -1 here. Hence, the final result of the given expression is -32.